Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from what we are. The camera module of Honor 60 SE looks similar to that of iPhone 13 Pro models. Honor 60 SE sits alongside the regular Honor 60 and Honor 60 Pro that both were launched already in December 2021. The smartphone is also a successor to Honor 50 SE that was launched in June last year. Because of reducing the price, they built an OLED panel and it comes with 6.67 inches display. As always, Honor SE series install 120Hz refresh rate, which is very demanded for the gamers. I'm very impressed about Honor 60 SE display design. The smartphone has less bezels, which gives very good look. If we compare Honor 50 SE and Honor 60 SE display, then we will find out that Honor 50 SE has a flat screen, but Honor 60 SE has a curved screen. Yes, they upgraded this smartphone somehow. Honor 60 SE will be available in 3 different color options: black, green and blue. It is not completely blue, it is like a rainbow. The current Chinese price of this device that I have converted the global currencies, Honor 60 SE price has been set at 2199 RMB for the base variant. The phone also comes in a 8GB RAM, 256GB storage model that is priced at 2499 RMB. On the part of availability, Honor 60 SE is currently listed on the Honor official stores and online in China. It is available for pre-orders with sales starting from February 18. I have a sample of 4K video. Let's see the colors. Its battery has 4300 mAh capacity and it supports 66 watt fast charging, which can be charged completely from 0 to 100% around 40 to 50 minutes. And the Honor 60 SE runs Magic UI 5.0 out of the box. That will eventually be updated of Magic UI 6.0. It also appears to run on Android 11 with a custom skin on top. The Honor 60 SE is 6.7 inches curved display that has a hole punch in the top middle of the screen. It has a single front camera setup for selfie, which is 16 megapixel lens, and around the back there is a 64 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor and an 8 megapixel ultra wide camera lens. I took a bunch of pictures and videos, and in the samples I am speaking Urdu because I recorded before. Hopefully you will get the voice recording result, and please let me know what do you think about the camera samples. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from what we are. 4K जो है ये अंदर की तरफ ये आपको आवाज़ इस तरह से 10 मिनट का टाइम है। 4K जो है आप 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, इसके पार 11 मिनट 12 मिनट का नहीं बना सकते। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब मैं इसको जूम करके देखता हूँ कि कितना जूम करता है। ये इसने वहाँ तक जूम किया है, जो अब मैं इसको बैक करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दूर इसने जूम किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह। तो अभी जो है ये वाइड है, अगर हम थोड़ा मज़ीद करते हैं तो इस तरह से बुरा नहीं लग रहा। अच्छा ये
ये वीडियो मैंने 1080p पे बनाई है बैक की, और ये 30 fps को सपोर्ट करता है, और जो है 4K जो है वो 30 fps ही करता है। तो अभी 1080 पे बना रहा हूँ ये इस तरह से, और ये भी मैं अंदर की तरफ से बना रहा हूँ, आवाज़ भी बेहतर होगी। अब इसका 4K भी देखते हैं हम। ये मैं इसका फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1080p इसका मैक्सिमम जाता है, 30 fps पे ही वीडियो बनाता है। तो इसका ये सेल्फी रिज़ल्ट है। अभी मैं बाहर हूँ तो आपको बाहर की आवाज़ ठीक से सुनाई देनी चाहिए। अभी मैं जाता हूँ अंदर की तरफ, देखते हैं कि अंदर कैसा आपको डिफरेंस मिलता है। तो ये मैं अभी आ गया अंदर, तो आवाज़ बिल्कुल ठीक से सुनाई देगी आपको ज़रूर। अब इसका बैक कैमरा भी देखते हैं। ये मैंने वीडियो बनाना शुरू की है, इसके अंदर जो है स्क्रीन को मैंने स्प्लिट कर दिया है। आपको आवाज़ सही से सुनाई देगी शायद, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी शोर वगैरह नहीं है। तो अभी मैं बाहर जाके देखता हूँ कि बाहर क्या सिलसिले कार है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये स्प्लिट जो स्क्रीन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मुझे, मैं जब इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है इसका रिज़ल्ट। अब देखते हैं इसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरे का भी। I wish you have enjoyed this video. Goodbye.